why do I feel like starting the French Friday episodes right from my balcony. Whew. So much better. Up. Okay, hola amigos, welcome back to my channel. It's not a regular video, it's a French Friday. Ok, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 4e épisode de French Friday. Actually, I was trying to vlog inside my room, but पता नहीं after like 5 takes I was like ऐसा लग रहा था vlogging आती ही नहीं है. So आज एक चीज़ समझ आ गई है, no matter how many videos you put out there, it's always like the first time. So that's when I thought, okay, let's go to the garden and try to make the video there. So hence I'm in my apartment garden. So from here we are gonna film this video called French Friday episode 4. बीच में I'll keep on taking off my glasses because जब तक eye contact नहीं होता ना, feel नहीं आती कि हम किसी को one on one देख के बात कर रहे हैं. So as the title suggests, today we are going to talk about a few French expressions that I have learned over the years and during my stay in France. I'm still in France, in south of France, Toulon. If you follow me on Instagram, you would know. So I'm going to share a few expressions with you which I have learned, but मैंने कभी वो books में नहीं पढ़े. I have never come across these expressions in like any of my French books. Few of them yes, but most of them I have learned like just by talking to French people and random people on the streets. So the first one is it's kind of hurting my eyes. So the first one is ça y est. And जितना ये weird सुनने में लग रहा है उतना ही weirdly it's written like ça y a. That means it's good, that's done. Like if you offer help to somebody and that task is already done, so they'll say no c'est bon, ça y est, c'est fini, like it's done, thank you. So that's number one. Another one is pardon. Pardon is used exactly same as excusez-moi, but I feel like excusez-moi takes a lot of time and effort to say. Like if you are in a crowd and you want to just pass the crowd, so you'll just say pardon, pardon, pardon और रास्ता बनता जाएगा and just you'll be on the other side of the crowd. So ये चीज़ मुझे नहीं पता थी. मतलब in the initial days I would keep on using excusez-moi, excusez-moi. इतना टाइम लगता है इसको बोलने में, excusez-moi, excusez-moi. But pardon is very easy, usable, flexible, हर जगह यूज़ हो जाता है. मतलब किसी को अगर excuse me बोलना है या गलती से किसी के पैर पे पैर चढ़ गया, कुछ भी ऐसी situation हो, just say pardon. So what I'm doing now is it's like you can just Google French expressions and all that, but I am just sharing like few very usable और जो daily life में use होंगे expressions. That is what I am sharing now. So the next one is j'ai entendu parler, which means that I heard somebody saying. जब किसी से तुम्हें कोई fact confirm करना हो, then you say j'ai entendu parler que, मैंने ये सुना है, ये सब जो भी तुम्हारा sentence है, and then the सामने वाला person will say yes or no. So this is very c'est très courant cette expression. Another one is péter la bide. So this one I learned, if you like follow me काफ़ी time से follow कर रहे हो. So the first few vlogs that I made from Toulon, and I was living with Joanna and Fiona. So वहाँ पे मैंने ये expression सीखा था. When you eat a lot and then it's like पेट फट रहा हो, then you say ça pète la bide, j'ai très bouffé. Bouffé is also a verb that I haven't heard any time before coming to France. So bouffer is another one. J'ai trop bouffé, ça pète la bide, मेरा पेट फट रहा है. And whenever I have used this expression, people around me laugh. So you can just flaunt your expressions in French that you are learning. It's a snail. Sorry for the distraction. Nature distracts me all the time. Okay, so that is another expression. Ça pète la bide, j'ai trop bouffé, mais franchement j'ai faim. Another one, मैंने ये सुना है, like I have read it somewhere in like comic books and everywhere, but इसका use कहाँ होता है और किस way में लिया जाता है. So when I was teaching in lycée, जब lockdown नहीं था, before lockdown when I used to go to work, तो वहाँ पे friends, among friends they would say femme ta gueule, like shut your mouth. So it's like it depends. अगर तुम funny way में और friendly way में बोलोगे, it will be taken the same way. अगर इसको थोड़ा annoying way में बोलोगे तो थोड़ा सा arrogant भी लिया जाता है इसको. So femme ta gueule, that's another one. And what else? Yeah, very very used, like
when you are in conversation with somebody and कहीं मैं रख देती हूँ बड़ी देर से ना पड़ा हुआ है, कहाँ रखूँ, चलो इस नेल के साथ ही बात करते हैं. So when you are like in conversation with someone and maybe you misunderstood या तुमने सुना नहीं, then you ask them to repeat instead of saying est-ce que vous pouvez répéter, which is like the very basic French. You can say comment, like क्या, जैसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, you can say quoi en français, or you can say comment. Comment is like very French. So that's another thing which is very c'est très courant. I hear this all the time everywhere in my house. जो ये my flatmates, they use this all the time. Even जो यहाँ पे मेरे colleagues वगैरह बने थे, they would also use this all the time. So comment instead of est-ce que vous pouvez répéter. So that can take your French level from here to here. Next one is sacré. That means that sucks. अगर कोई जैसे it's used the same way as that sucks is used, and somebody is telling you like aujourd'hui oh là là ce matin j'ai raté mon bus et après il a commencé à pleuvoir. Always mess this verb around. Après il a commencé à pleuvoir et moi je suis tout mouillé. बोलना क्या था, एक्सप्रेशन क्या था? तुम ये जिसको भी बात बता रहे हो, that person will say sacré, that sucks. So yeah, that is how you use this. And like when you come to France, you will see, honestly I'm not a fan of baguette जो यहाँ पे मिलती है, the French bread. मैंने खा रखी है और बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं that you know सा abîme my roof of my mouth, so इसलिए मैं नहीं खाती. But if you are here and you are going to buy the baguette, so instead of saying je vais acheter une baguette, you can say je vais chercher une baguette. chercher का actual meaning होता है to look for, but you can use this in this context also. This is like, you know, more French than typical basic French. Or you can say, if you are going to do some grocery shopping, instead of saying je vais acheter des légumes et fruits, you can say je vais faire des courses. I think you must have read it somewhere because it's very, you know, c'est très courant. मेरे को इसकी English नहीं मिल रही, so I'm gonna use this all the time. And a few expressions that you can use here and there. It's like, you know, gloomy or sunny mix up मौसम हो रहा है. So another expression that you can use is bien sûr que oui. That means absolutely yes. And you can say bien sûr que non. Absolutely no. So it just, you know, it gives more impact to your sentence and what you are going to say. So you can say bien sûr que oui. Bien sûr que no. In English we say, okay, forget it. So in French you can say laisse tomber, just leave it. So it's used in the same context again. कहाँ रखूँ इसको? Okay, so this one I heard in Granada. If you have seen that vlog, somebody said that c'est pas tes oignons. Oh, I thought there was a squirrel. So somebody said that c'est pas tes oignons. That moment I understood, okay, this is how it's used. So the literal meaning of this expression is, this is none of your business, or it's not your business. So it's used in the same context as in English. So you can say c'est pas tes oignons, or you can say ce n'est pas tes oignons. But you have if you have seen the third episode of French Friday, like last week that I uploaded, so you would know that you can remove the NE and you can just say c'est pas tes oignons. If you want to bail out from a conversation, कोई बहुत पका रहा है या बस जाना है, या actual में genuinely if you have some work, you can say j'ai un truc à régler. I have something to do, and then you can just go away. You can just leave. So that's another one. J'ai un truc à régler. Truc is it, if you translate it, truc ça veut dire thing. I have a thing to do. So you can use it in that context and thank me later. Okay, so if you have seen that vlog when my cat ran away, like Jackass जब घर से भाग गया था, then I told Thomas that Jackass भाग गया है. Then he said thank you je vais धूप. Then you can say thank you je vais m'occuper. I will take care of that. So this was the expression मैंने उससे सीखा है. So you can say je m'occuperai, I'll take care of that, or you can say je vais m'occuper,
I will take care of that. Another one जो कि मैंने अपने अपार्टमेंट मेट से ही सुना है, अपार्टमेंट मेट्स ये टिफनी एंड थॉमस से ही सुना है. When you want to say awesome, then you can say nickel. एंड जेनियाल का तो लिटरल मीनिंग ऑसम ही होता है, बट जो मैंने यहाँ पे सीखा है और बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, दैट इज़ निकेल. सो यू कैन यूज़ दैट वन. And a few words like here and there, apparemment, quasiment. I'll make a separate video on that, but for now expressions के लिए ही रखते हैं. Another thing which is like more or less ça fait partie des expressions seulement, that is verlan. If you invert verlan, ça veut dire inverse. So this was used like back in the time जब थोड़ा सा you know shady way में बात करनी हो, किसी को समझ ना आए, उस टाइम बहुत कम लोगों को पता था इस type of language के बारे में. It is French, but it's like you know if you take one word, you inverse it and then you use it. So now it's very you know c'est très courant. कितनी बारी यूज़ करूँगी ये, बट मुझे इसका इंग्लिश याद ही नहीं आ रहा कि यार ये बहुत यूज़ होता है. तो verlan is like très courant maintenant, but so verlan ko if you inverse it, it means l'inverse, that means inverse. So verlan. Okay, first one is énervé, you can say vénère, that is verlan. Another one is défoncer, it has 3 syllabi, क्या बोलते हैं इसको, I don't know. It has 3 défoncer will become fonce de. मफ इज़ वेरी लाइक, ये मेरे को किसी टीचर ने ही समझाया था, एक टीचर ने मुझे बताया था. मफ इज़ द वेरलॉ ऑफ फार्म विच मीन्स लेडी और वुमेन, बट मफ इज़ नॉट रियली अ गुड वर्ड टू यूज़ लाइक इवन इन अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन. सो अवॉइड टू यूज़ दैट, बट इफ समबडी सेइंग, यू शुड नो, पता होना चाहिए वेरलॉ एंड दीज एक्सप्रेशंस will eventually help you understand the language a little bit more, जो कि books और इधर उधर से नहीं समझ आने वाला था. At least मुझे तो नहीं आया था. Ouch, it hurts. Okay, then you have ouf. Ouf is the verlan of fou, and fou ça veut dire crazy en français. So crazy, then you can say c'est ouf, it's crazy. So ouf or fou, c'est fou. से फू कोई नहीं बोलता, से ऊफ बोला जाता है. सो यू कैन से ऊफ, इट्स क्रेजी, से डैंग, से बॉर्डेल. आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड वन टू यूज लाइक इन अ formal situation, but c'est bordel, c'est ouf, c'est dingue, it's very, c'est très courant. Don't kill me after this. मुझे नहीं आ रहा है इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, c'est très courant. It happens. वो जो रायता बनता है ना दिमाग में. Okay, apart from verlan, बहुत सारे verlan हैं. You will keep, you know, I'll keep adding them here and there in every episode. Then il y a quelques mots que je pense que you should know. First one is pot, mon pot, my friend. ये मैंने मूवीज़ में सुनना शुरू कर दिया था, बट यहाँ पे इतना नहीं सुना, बट in like rest of the France it's very common, like c'est mon pote, this is my friend. And then you have gamma means boy, garçon, so you can use gamma is very, c'est très courant. Je travaille की जगह you can say je bosse. Bosser is the verb like to work, so you can say je ne bosse pas or je bosse pas, je travaille pas. It has the same meaning. Another way to express that you like something, so you can say, you can use this verb kiffer, which means to like. So you can say je kiffe les chocolats noirs, I like black chocolates. Je kiffe la nature, I like nature. That was a weird sound. So you can use this verb kiffer and it's conjugated the same way as all the ER regular verbs. And then you have like Quoi de neuf, what's up, what's new, जिसका आंसर मुझे आज तक देना नहीं आया. You know, I get so weird out if somebody sends me a text message या कुछ DM वगैरह आता है ना, quoi de neuf, या इंग्लिश में भी आ जाता है ना what's up. I just don't know how to reply to that. I'll always say nothing, rien. So this is like a very cool French expression that you can use among your friends, you know, in informal situations. Quoi de neuf, what's up dude. And then dude se yaad aaya, guy ko you can say like a boy, not a boy, like a man, you can say mec. But this is also not like a good word to use, but you should know, because some people will use these kind of words and you should be smart enough to know कि अच्छा हाँ मुझे पता है. And you know,
किसी भी फ्रेंच के आगे इफ़ यू लाइक कमिंग फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू स्पीक फ्रेंच, सबको ऐसा लगता है कि हाँ बेसिक फ्रेंच आती होगी, एंड देन यू स्पीक यू नो यू यूज़ द वेरलॉ, तब उनके तोते उड़ जाते हैं कि ओह इनको ये पता है. सो यूज़ दीज एंड लेट मी नो इफ़ यू ऑलरेडी न्यू सम ऑफ दीज दैट आई मैंशन इन द वीडियो. एंड इफ़ you like this video, you know what to do. Give a like, subscribe to the channel, that red box, and also press the bell icon, which means every time you will be notified jab bhi video dalegi. If you don't press that, sometimes you won't get the notification, so please do that and share this video with your friends and family. Like जिसको फ्रेंच आती है, नहीं भी आती तो वो कुछ सीख ही लेंगे. सो शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड लव इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बताओ कौन से एक्सप्रेशन सुने हुए थे, कौन से नए थे और कौन से लाइक पता थे बट उनका यूज़ अब पता चला. सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड देयर इज़ अनदर वन वेरलॉ जो मुझे अभी याद आया. देयर इज़ अ फ्रेंच सिंगर कॉल्ड स्ट्रोमाए. बहुत लोगों ने सुना होगा जो फ्रेंच पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली. स्ट्रोमाए इज़ ऑल्सो वेरलॉ ऑफ मास्ट्रो. मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी यहाँ आके पता चला है. एंड इवन हिज सॉन्ग, हिज वन ऑफ हिज सॉन्ग, आई विल मेंशन इट हियर, उसका वेरलॉ है ट्यूए ऊ पापा, पापा ट्यूए, मतलब वेयर आर यू पापा. सो दैट्स दैट. सो आई गेस आई एम श्योर मैंने सारे कवर नहीं करे बिकॉज देर आर सो मैनी एक्सप्रेशंस एंड सो मैनी वेरलॉ. I think I'll make a sequel of this video. If you like this video तो उससे पता चल जाएगा if you want to see a sequel of this one or not. So yeah guys, feel so good. Okay, I'll see you next time on Friday and Tuesday as well. Every Friday there will be a nouvelle episode of French Friday, so don't miss out on that, because that way you can learn and improve your French like never before. And every Tuesday there will be like regular vlogs, maybe travel vlogs, some knowledge, some infotainment. So yeah, I'll see you next time. Till then, you know what to do. Dream, hustle and explore. Bye bye. I'm going to go. भूख लग रही है, प्यास लग रही है. Bye bye.